I have heard many people say things like PM jobs में काफी कंपटीशन है और आई एम अप्लाइंग फॉर मेनी पीएम जॉब्स लेकिन मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा है और मार्केट इज डाउन एंड मेनी सच थिंग्स बट आई थिंक दैट यू माइट बी अप्लाइंग इन अ रॉन्ग वे एंड दैट इज आपको कॉल्स नहीं आ रहे हैं पीएम के लिए बिकॉज आई बिलीव इफ यू आर इन टॉप 1% देन कोई भी मार्केट सिचुएशन हो कितना भी कंपटीशन हो यू विल इजीली गेट पीएम कॉल्स एंड इवेंचुअली आपको पीएम ऑफर मिल ही जाएगा. So, in this video, I am going to tell about few things which really worked for me when it comes to getting PM offers and also converting the PM offers. Will it work for you? To be honest, I don't know. मैंने ये figure out किया on the way, but only goal is कि maybe आपको कुछ अलग insights मिल जाएंगे, जिससे you might tweak your applying process, जिससे आपको आगे जाके कुछ help हो जाए. So that is the only intention. So let's dive into it. So as I said, the main topic is going to be about how can you get that PM interview calls जिससे आप अपना PM job land कर पाओ. So yeah, before even starting this, just a bit about me. So currently I'm working as an associate product manager at NextWave. Up तक I've solved many product case studies, I've landed few PM offers as well. And most importantly, I have helped more than 50 people get into product roles just by following the simple steps which I'm mentioning right now. I just want to focus on two things first before even going into the PPT. First is traditional job method, I think, is dead. Like if anyone is thinking कि मुझे LinkedIn पे apply करने से job मिल जाएगा, then I don't think it is going to happen. Even if it happens, आपको बहुत जगह पे apply करना पड़ेगा. थोड़ा random भी होगा ये सब चीजें. And then there could be a bit of possibilities कि आपको job मिल जाएगा. बट एज एवरीवन नोज कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है एवरीवन इज यूजिंग चैट जीपीटी तो डिफरेंशिएटर पॉइंट काफी कम है व्हेन इट कम्स टू अप्लाइंग थ्रू स्टैंडर्ड प्रोसेस. नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट which is more important than this and which is this, like before even starting for interview search you should be confident that you have right skills of first principle, skills of structured thinking, communication, storytelling and analytical skills. ओनली व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस थिंग्स देन ओनली आप जॉब अप्लाई करने के बारे में सोचो या इंटरव्यू कॉल्स लाने के बारे में सोचो. बट फर्स्ट मेक श्योर कि यू आर कॉन्फिडेंट ऑन ऑल द अबाउ स्किल्स व्हिच आई हैव मेंशन्ड बिकॉज इवन इफ आपको इंटरव्यू कॉल्स आ भी गए इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा ऑन दिस स्किल्स. फॉर मी मैंने कॉन्फिडेंस लाया था ऑन दिस स्किल्स बाय वर्किंग ऑन मेनी केस स्टडीज. So if you want to know exactly मैंने क्या क्या किया था to gain confidence on the skills by building case studies, I have made a detailed video on this. I think आपको ऊपर कहीं पे दिख जाएगा this video. So just look at this video first. So I'm assuming कि you have skills and now you are looking for a PM job. So again, as I said, I would be just focusing on the things which work for me. Like मैंने बहुत जगह पे try किया है, test किया है all these methods, and that is when I reached to this conclusion. So basically, I followed a three-step process, and that really helped me a lot in choosing the right company and getting the interview calls. And I'm just walking you through the three process now in this PPT. So first step was getting clarity on the domain. Like मुझे exactly कहाँ पे जाना है for PM role. Because if you think logically, product management is more about problem solving. So अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है इन पर्टिकुलर डोमेन एंड अगर आप वहां पे पीएम बन गए देन इमेजिन हाउ बैडली यू माइट परफॉर्म क्योंकि आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक्साइटेड ही नहीं हो. सो दैट इज द रीजन फर्स्ट थिंग आई डिड वाज गेटिंग क्लैरिटी कि मुझे कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना है. देन वंस आई हैड द क्लैरिटी ऑन डोमेन सेकेंड थिंग वाज मेकिंग अ लिस्ट ऑफ कंपनीज जहाँ पे आई हैव अ चांस ऑफ गेटिंग अ पीएम जॉब. सो मैंने इसको टू थिंग्स में डिवाइड किया था. वन इज ड्रीम कंपनीज एंड सेकंड इज बैकअप कंपनीज. ये क्या है आई विल एक्सप्लेन फर्दर इन द वीडियो. बट मेक अ लिस्ट ऑफ कंपनीज एंड ओनली टारगेट दोज कंपनीज कि मतलब मुझे ये कंपनीज में ही जाना है. आई विल प्लान माई prep or I will plan my targeting only on these companies because I have high probability of getting into these companies. So make a list of those companies first. एक बार ये हो गया then what I did was I did targeted cold emailing. अभी कोल्ड ईमेल्स तो सबको पता है क्या होता है बट व्हाट आई मीन बाय टारगेटेड कोल्ड ईमेल्स जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड तो आपको पता चलेगा कि व्हाट वर्क फॉर मी. आई विल डाइव इनटू ईच ऑफ दिस पॉइंट्स इन डिटेल नाउ तो आपको पता चलेगा व्हाट एग्जैक्टली आई मीन बाय दिस पॉइंट्स.
So to get the clarity of domains, what I did was I did lots of case studies and also attended lots of networking events. Like in this product networking events, what happens is काफी product managers आते हैं and they discuss about different things. So when you get different perspective from different people in different domains, then आपको idea आ जाता है कि मतलब कौन सा domain मेरे लिए interesting होगा, कौन सा नहीं होगा and all those things. So when it comes to case studies as well, I did 25 plus case studies in different domains. And अगर आपको पता नहीं होगा कि how I do case studies, I have a product management 101 यूट्यूब वीडियो एज वेल जहाँ पे मैंने कंप्लीट डिकोड किया है कि हाउ आई सॉल्व प्रोडक्ट केस स्टडीज सो यू कैन लुक एट दैट एज वेल सो एंटायर आइडिया ऑफ दिस प्रोडक्ट केस स्टडीज वाज कि मतलब मुझे डिफरेंट डोमेन्स में केस स्टडीज करना है सो दैट मुझे पता चलेगा कि मुझे कहाँ पे इंटरेस्ट है एंड कहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है एंड जिस डोमेन में मुझे इंटरेस्ट है आई विल जस्ट टारगेट कंपनीज फ्रॉम दैट डोमेन्स ओनली सो मुझे जैसे मैंने केस स्टडीज किया आई गॉट टू नो कि मतलब कौन से कंपनीज में मुझे जाना चाहिए कौन से डोमेन के कंपनीज में नहीं जाना चाहिए and that is when I got to know कि EdTech, entertainment, dating, and gaming are the companies where I am more interested in as compared to fintech, fitness, music, and other parts. So that is what I mean by clarity of domain. Once you research a lot about any domain, आपको आइडिया आ ही जाता है कि यार मतलब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये मेरे कल्चर वैल्यूज के साथ ज्यादा अलाइंड है एंड मैं इसमें मजा आ जाएगा इफ आई वर्क एज अ पीएम इन दिस कंपनी तो वो क्लैरिटी पहले मैंने लाया था सो वंस आई हैड क्लैरिटी ऑन किस डोमेन में जाना है देन सेकंड थिंग वाज हैविंग क्लैरिटी ऑन कौन से कंपनीज उसमें टारगेट करनी है सो व्हाट आई डिड वाज आई मेड अ लिस्ट ऑफ टू थिंग्स फर्स्ट इज के ड्रीम कंपनीज एंड सेकंड इज कंपनीज हु आई एम इंटरेस्टेड इन टू गो एज अ पीएम सो व्हाट आई मीन बाय ड्रीम कंपनीज इज एनी कंपनी जहां पे मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन एज अ पीएम काफी हाई है एंड व्हेन इट कम्स टू डिसाइडिंग कौन से ड्रीम कंपनीज है और कौन से इंटरेस्टेड कंपनीज है I chose six major factors. So first thing obviously is salary. But apart from salary, I consider other things as well कि मेरा interest है या नहीं है कंपनी में. Would I like to work in this company or not? इनका work culture कैसा है? Are they hiring freshers like me for this role and everything? So वो मैंने analyze करके I made a list of dream companies which I have higher probability to go into and वहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा focus करना है. And second company was the companies where I was interested in. वेयर मुझे पता है कि थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम हो सकता है बट अगर वहां पे भी मैं चला गया इट इज गुड सो वंस आई मेड दिस लिस्ट देन आई सेड थर्ड पॉइंट इज फोकसिंग ऑन कोल्ड ईमेल्स सो फॉर द कंपनीज वेयर आई वाज जस्ट इंटरेस्टेड इन एंड जहाँ पे प्रोबेबिलिटी इतना नहीं लग रहा था मेरा सो व्हाट आई डिड वाज मैंने एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट बना दिया था कि मतलब शॉर्ट ईमेल जहाँ पे ज्यादा चेंज नहीं होगा बस थोड़ा चेंज करना पड़ेगा बेस्ड ऑन कंपनी उनका वर्क कल्चर एंड एवरीथिंग बट बेसिक टेम्पलेट वाज बेसिकली कि आई एम लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ रोल इन योर कंपनी दिस आर द फ्यू रीजंस व्हाई आई थिंक आई फिट फॉर द रोल एंड इफ यू वांट टू हैव फर्दर डिस्कशन आई कैन कम ओवर अ 5 मिनट्स गूगल मी एंड मैं ये रैंडमली कोई भी कंपनीज को नहीं भेजता था आई यूज टू सेंड इट टू ओनली दोज कंपनीज हु आर एक्टिवली हायरिंग तो उनके ही कंपनीज के मैं हायरिंग मैनेजर्स या प्रोडक्ट मैनेजर्स को ये मेल भेजता था to understand कि if I can get a job in that company or not. So similarly ये another mail है for event brief जो मैंने किया था saying that I fit for your role because I satisfy these 4 points which I think would be useful for APM at your company. And as you can see here, I even got a reply from them saying कि okay apply on this link for the job. So this is how I used to apply for the companies जहाँ पे मुझे लगता था कि यार मतलब मुझे जाना तो है लेकिन देर इज लेस प्रोबेबिलिटी कि ये कंपनी मुझे लेगी बट व्हेन इट कम्स टू ड्रीम कंपनी मैंने थोड़ा ज्यादा एफर्ट पुट इन किया था इसमें लाइक ऑब्वियसली वो सब मेल तो मैं करता ही था बट दिस मेल वॉज मोर डिटेल्ड मोर थॉट थ्रू एज कम्पेयर टू द इंटरेस्टेड इन वाले कंपनीज के लिए जो मैंने लिखा था बिकॉज एंटायर आइडिया वॉज कि सिंस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है थोड़ा हम लोग डिटेल में लिखते हैं कोल्ड ईमेल एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कोल्ड ईमेल आई ऑल्सो सेंड अ स्मॉल पीआरडी saying कि मतलब if I became a PM for your company, this is what I would do for your company, this is the reason I would like to work for your company and everything like that. तो वो सब मैंने एकदम डिटेल में लिख के पीआरडी लिखा था तो ये पीआरडी में डिस्क्रिप्शन में अटैच भी कर दूंगा यू कैन गो थ्रू द थिंग एज वेल कि मतलब मैं कैसे डॉक्यूमेंट बनाता था एंड हाउ आई यूज टू पिच द कंपनीज एज वेल सो ऑल दिस थिंग्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सो दैट यू कैन गो थ्रू दिस
एंड गेट एन आइडिया कि मतलब ड्रीम कंपनीज के लिए कितना ज्यादा एफर्ट लिया था एज कम्पेयर टू इंटरेस्टेड इन वाले कंपनीज में, क्योंकि सिंस प्रोबेबिलिटी इन इंटरेस्टेड इन वाज लो, तो मुझे पता था कि यार मतलब इतना एफर्ट डाल के फायदा नहीं है, एंड इंटरेस्टेड इन वाले कंपनीज मोर देन 50 है, तो सबके लिए इतना डिटेल में लिखना काफी डिफिकल्ट होता। तो इसके लिए वहां पे मैंने एक जनरल टेम्पलेट बनाया था, एंड फॉर ड्रीम कंपनीज आई हैड अ टेम्पलेट विच वाज मोर फोकस्ड, एंड प्लस सब कंपनीज का मैं पीआरडी बना के बेचता था। सो इट वाज मोर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बट सिंस ये 5-6 कंपनीज के लिए करना था, तो आई वाज लाइक कि कर लेते हैं यार, प्रोबेबिलिटी तो ज्यादा है। एंड बिलीव मी और नॉट, जस्ट बाय डूइंग दिस आई गॉट कॉल फ्रॉम मेनी कंपनीज फॉर इंटरव्यूज। लाइक ड्रीम कंपनीज में तो ऑलमोस्ट सब कंपनीज में एटलीस्ट आई had इंटरव्यू कॉल और असाइनमेंट राउंड का कॉल, एंड व्हेन इट कम्स टू इंटरेस्टेड इन वाले कंपनीज एज वेल, आई थिंक आउट ऑफ 60 to 65 कंपनीज विच आई हैव अप्लाइड टू, अराउंड मुझे 10 से 12 कॉल्स तो आ गए थे, सो इनफ इंटरव्यू कॉल्स टू कन्वर्ट। सो दैट वाज माई स्ट्रैटेजी सो फार, कि मतलब यार मतलब मुझे 200-500 कंपनीज के लिए अप्लाई नहीं करना है, आई शुड जस्ट अप्लाई फॉर 60 to 65 कंपनीज, बट आई शुड मेक श्योर कि आउट ऑफ 65 कंपनीज मुझे 15 कंपनीज का एटलीस्ट इंटरव्यू कॉल तो आ जाए। एंड एक बार इंटरव्यू कॉल आ गया, देन इट डिपेंड्स ऑन माई स्किल्स कि मैं कितना कन्वर्ट कर सकता हूँ एंड कितना नहीं कर सकता। सो अगेन डिस्क्लेमर हियर, कि आपको इंटरव्यू कॉल तो आ जाएगा इससे, बट यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि आपके पास स्किल्स है। जब तक स्किल्स नहीं है, ऑल दिस प्रोसेस वोंट मेक सेंस, क्योंकि आपको इंटरव्यू कॉल आने के बाद भी आप रिजेक्ट हो जाओगे। सो दैट इज वाई आई एम अगेन आइट्रेटिंग ऑन द पॉइंट, focus on skills first, focus on gaining the right skills, focus on gaining the confidence, focus on building case studies and gaining the skills. एक बार वो हो गया, then you follow this method. Maybe it might work for you, it might not work for you, it depends on आप कितना effort put करने को तैयार हो, because obviously it is more time consuming than just applying on LinkedIn or any other portal. So yeah, that's a bit about the process which I used to follow so far, but I have changed the approach now. अभी आप पूछोगे कि ये वर्क हो रहा है, तो why do you want to change it? So only reason for changing is कि मतलब I realize कि ये scalable नहीं है। Like 60-65 कंपनीज के लिए तो ठीक है, I cannot follow this process for maybe 500 कंपनीज, क्योंकि वहां पे मुझे कोल्ड ईमेल तो खुद ही भेजना है ना। उसके लिए मुझे कंपनी का ईमेल आईडी ढूंढना पड़ेगा, उनमें ओपनिंग है या नहीं ढूंढना पड़ेगा, देन कंपनीज को अप्लाई करना पड़ेगा, देन आई नीड टू वेट फॉर 10 to 15 days टू गेट देयर रिप्लाई, फॉलो अप लेना पड़ेगा, एंड ऑल दो चीजें आ जाती है। तो मुझे लगा कि ये स्केलेबल नहीं है, इफ आई वांट टू एक्सटेंड दिस प्रोसेस फ्रॉम 65 कंपनीज टू 650 कंपनीज, एंड दैट इज द रीजन आई चेंज द अप्रोच। आप अभी सोच रहे होगे कि अप्रोच क्या है, देन अप्रोच इज सिंपल, दैट इज बीइंग विजिबल ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। So now instead of me putting in efforts in finding the right company, I want companies to look at my social presence and approach me if they think I align with their vision, values, and other things as well. So that is a long-term goal which I'm trying to see if it works or not. And as I said कि मतलब it is a long game. ऐसे नहीं कि आप एक महीने में रिजल्ट देख सकते हो. For now, I can say that अभी तक मैंने 200 प्लस लिंक्डइन पोस्ट किए होंगे, मैंने अराउंड 30 यूट्यूब वीडियोस पोस्ट किए होंगे मेरे चैनल पे, एंड नाउ आई कैन सी कि मुझे अभी रिजल्ट्स दिख रहे हैं। लाइक नाउ यू कैन सी कि मुझे अभी काफी लोग अप्रोच कर रहे हैं ऑन लिंक्डइन, सेइंग कि आर यू विलिंग टू join our company as an PM or APM and all those things. Like every month I'm getting 1 to 2 messages like this. And I think this is working now. कि मतलब now I don't need to rely on any job portal or even put in efforts on all this job search. Only thing I need to do is put my best side over social media platform. Even if I don't think from job perspective, only putting things on social media has many benefits. Like obviously people would approach you for the job, that is the first benefit. But apart from that और 5 benefits है जो मुझे लगे कि ये मेथड में है. So if I just want to recap कि मतलब summary देना है कि what I just said in this 5 to 10 minutes. So पहले ही मुझे पता चल गया था after first 2 months कि जॉब पोर्टल पे अप्लाई करके कुछ फायदा नहीं होने वाला है वैसे भी. So that is when I first started with gaining right skills. Once I had the right skills, then मैंने कंपनीज को अप्रोच करना चालू किया, एंड वो अप्रोच भी काफी टारगेटेड अप्रोच था कि मैंने ऐसे नहीं कि सब कंपनीज को अप्रोच किया एक साथ में. आई फर्स्ट हैड क्लैरिटी ऑन डोमेन फर्स्ट. डोमेन होने के बाद आई मेड अ लिस्ट कंसिडरिंग मेनी फैक्टर्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, एंड देन आई डिड टारगेटेड कोल्ड ईमेलिंग. बट बहुत जल्दी मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब ये 60-65 कंपनीज और
फर्स्ट पीएम जॉब के लिए तो सही है, बट इफ आई वांट एनीथिंग टू बी स्केलेबल then that has to be social media presence only, and that is when I switched to social media presence because मुझे उसमें काफी benefit लगे, not just from job perspective but all the many other benefits like you build some good relationships, आप famous हो जाओगे, tax won't be relevant, companies would start approaching you rather than you approaching companies and many other things, and that is when I switched to this approach. So now I'm trying in this way only because this approach is giving me 1 to 2 job opportunities every month. Obviously, that does not mean that I'm going to take it because I'm enjoying my current job as well. But बैकअप है कि ऐसा नहीं कि अगर किसी ने मुझे जॉब से निकाल दिया तो मेरे पास जॉब ही नहीं होगा, फिर से ढूंढना पड़ेगा. So that is not the case now. So yeah, this is what I did to get the interview calls. But again, reiterating on the fact before closing the thing, focus on skills first. Once you have gained the skills, then think of getting interview calls. Because I think interview calls getting is काफी simple because most of the people are applying from old traditional methods and they are not getting calls. If you follow this method, I am pretty sure you can get interview calls very easily. Just आपको टारगेट अच्छे कंपनीज को करना है, टारगेट सही कंपनीज को करना है विच अलाइन विथ योर वर्क एंड इंटरेस्ट. सो दैट्स इट. बता देना आपको कैसे लगा ये वीडियो. काफी इम्प्रॉम्प्ट वीडियो था ये, मुझे लगा कि ये बना देते हैं तो पीपीटी बना दिया. And this is the time I'm recording the video now, almost 4 in the morning. But yeah, do let me know on your views on what do you think of this video. I will try to improve on the next videos as well based on this feedback. And chalo, bye, see you in the next video.